हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेसिन स्टैक्ट, जिसको सोडियम फ्यूज़न स्टैक्ट कहते हैं, एंड डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे। लेसिन स्टैक्ट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। These elements are covalently bonded to the organic compound. In order to detect them, these have to be converted into their ionic form. This is done by fusing the organic compound with sodium metal. The ionic compound formed during the fusion are extracted in aqueous solution and can be detected by simple chemical test. The extract is called sodium extract, sodium fusion extract or Lessen extract. कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और एक्स है, इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करने पर ये सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम एक्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब बनते हैं। तो टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन कैसे करेंगे आप? कार्बन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन फ्यूजन विद द सोडियम मेटल गिव सोडियम साइनाइड soluble in water. This converted to sodium ferrocyanide by the addition of sufficient quantity of ferrous sulfate. Ferric ions generated during the process react with the ferrocyanide to form blue precipitate of ferrocyanide. तो आप ये रिएक्शन देखें, सोडियम है, अगर उस कंपाउंड में कार्बन, नाइट्रोजन है तो सोडियम साइनाइड देगा। अगर सोडियम साइनाइड बना है तो फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करने पर ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स देगा। ये कॉम्प्लेक्स अगर है तो फेरिक से 3+ रिएक्शन करने पर फेरिक फेरोसाइनाइड देता है। उसी तरह टेस्ट फॉर सल्फर। इफ सल्फर इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम फ्यूजन विल कन्वर्ट इट इनटू द सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड आयंस आर readily identified using sodium nitroprusside. Appearance of a deep violet color indicates sulfur. अगर आपके कंपाउंड में सल्फर है तो ये जो सोडियम है वो सोडियम सल्फाइड देगा। अगर सोडियम सल्फाइड है तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से रिएक्शन करने पर सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड पर्पल वायलेट कलर देगा। तो प्रेजेंस ऑफ सल्फर कैन आल्सो बी आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ ब्लैक प्रिसिपिटेट लेड सल्फाइड आफ्टर एडिशन ऑफ लेड एसीटेट। अगर सोडियम सल्फाइड में अगर उससे नहीं पता चला तो आप लेड एसीटेट डाल दीजिए, तो ये आपका PbS देगा जो ब्लैक कलर का होता है। टेस्ट फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर टुगेदर। इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन द सेम सैंपल, then sodium thiocyanide is formed with sodium. Ionic form of the nitrogen and sulfur together in the extract sodium thiocyanide. React with the ferric chloride to give the ferric thiocyanate a blood red color complex. Thus the appearance of blood red color indicate the presence of nitrogen and sulfur together. अगर आपके कंपाउंड्स में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है तो सोडियम थायोसाइनेट बनेगा और उसको फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो ये वाली कंपाउंड बनती है। टेस्ट फॉर हाइलोजेंस। हाइलोजन रिएक्ट विद द सोडियम टू फॉर्म सोडियम हाइलाइड। द सोडियम हाइलाइड इज ट्रीटेड विद द सिल्वर नाइट्रेट टू गिव द precipitate of silver halide. A white precipitate silver chloride soluble in ammonium hydroxide indicate the presence of chlorine. An white precipitate silver bromide partially soluble in ammonium hydroxide indicate the presence of bromide, while yellow precipitate AgI insoluble in ammonium hydroxide indicate the presence of iodine. अगर आपके कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो सोडियम के साथ सोडियम हाइलाइड देगा। सोडियम हाइलाइड अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, AgX देता है, तो उसको प्रिसिपिटेट को हम देखेंगे कि सोडियम के अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन होती है। प्रोसीजर फॉर द लेसेन स्टेप। टेक ए स्मॉल piece of sodium metal with a spatula and dry it in between the folds of filter paper. Place the piece of sodium metal in ignition tube and melt it, and add a small amount of given sample in the ignition tube. Heat the ignition tube over the flame till it becomes hot. Take 20 ml of distilled water in china dish and crush the red hot ignition tube 4 to 5 tubes in it. Boil the mixture for 5 minutes and then filter it. And this colorless filtrate is called sodium extract or sodium fusion extract or Lessen extract. Perform different tests taking 1 to 2 ml of the extract for detections the presence of element. A color filtrate indicate incomplete decomposition and entire fusion procedure should be repeated. आप देखें कि chemical test for the detection of element. 1 to ml of Lessen test in a test tube. Add 2 to 3 crystals of ferric sulfate
and boil it. Add few drop of sodium hydroxide. A dirty green precipitate is formed. Now add 2 to 3 drop of concentrated sulfuric acid by the walls of the test tube. The appearance of Prussian blue color ferrocyanide indicate the presence of nitrogen. Prussian blue color observation. Test of sulfur. Take 1 to 2 ml Leysen extract and add few drop of sodium nitroprusside. If sulfur is present, then sodium nitroprusside is formed, which is purple violet in color. Take 1 to 2 ml Leysen extract and add lead acetate containing acetic acid. The formation of black precipitate PBS lead sulfide indicate the presence of sulfur. Nitrogen and sulfur test together. Take 1 to 2 ml of Leysen extract and add 2 to 3 crystal of ferric chloride. If both nitrogen and sulfur present, then ferric thiocyanate is formed. Blood red color. Test for the halogen chlorine, bromine, iodine. Take 1 to 2 ml of Leysen test, add 1 to 2 drop of nitric acid and then add silver nitrate solution. The formation of white precipitate silver chloride that is soluble in ammonium hydroxide indicate the presence of chlorine in the given sample. The formation of an off-white precipitate that is partially soluble in ammonium hydroxide confirm the presence of bromine. Where the formation of yellow precipitate insoluble in sodium hydroxide, ammonium hydroxide confirm the presence of iodine in the given sample. Yellow precipitate. Precautions क्या क्या रखना है आपको? Sodium metal is highly reactive. When exposed to air, it reacts even with the moisture present in the atmosphere. It also reacts with sweat of hand. Therefore, do not hold it with the hand. Always use dry forceps while handling sodium metal. Before using sodium metal in any experiment, press it within the fold of the filter paper to remove oil. Use a dry ignition tube for the sodium fusion. Sodium reacts with the water violently, but unused sodium metal piece bag it in its container. Do not throw it into the sink or dustbin. Repeat the process of the sodium fusion with at least 3 ignition tubes. This is to ensure that the fusion has taken place. After immersing the red hot ignition tube in water, break it with the glass rod gently. Boil the content for 2-3 minutes so that to extract the soluble sodium salt in water.